Ramana Jaya Jaya Navala Kishore Jaya Gopi Chit Chora Prabhu Jaya Jaya Makhan Chore Jaya Jaya Makhan Chore Shri Krishna Chandra Bhagavan ki Jagat Guru Srila Prabhupada ki उपस्थित भगवत कथा अनुरागी Hare Krishna, I welcome you all, the devotees who have gathered here. इस सभा को परम सुशोभित बनाने I वाले especially would like to heartily welcome कृष्ण भावना the senior devotees of इस्कॉन के the International Society of Krishna Consciousness who have beautifully decorated this assembly. देश विदेश से I also would like to welcome you all who have gathered through the medium of बड़ी भारी मात्रा Facebook, में YouTube, etc. कथा का श्रवण in करने huge वाले numbers, समस्त श्रोतागण all the listeners, एवं and in बड़े भाव particular, से I welcome the host family who, with their mellowful heart, have organized this beautiful katha, the residents of Canada, the Parmar आप सभी family. भक्तों का श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस I के welcome you all on the fourth day of this Bhagavatam Katha, and आप सबके our चरणों में humble obeisances हमारा प्रणाम at your lotus feet. राधे श्याम Radhe Shyam. परम सौभाग्य पूरे साल में अनेकों पर्व आते हैं We are extremely fortunate that throughout the year पर्वों का we राजा have so many festivities अक्षय तृतीया around the year, यह but उत्सव the king of all the festivals, that is Akshay Tritiya, शास्त्र में that ऐसा we are लिखा है, celebrating चाहे कोई भी उत्सव हो, today, it is mentioned in the scriptures that मेहनत की जाए whatever the festive occasion might be, and no matter how much we work hard to prepare it, नहीं सुनेंगे but until the point तब तक we उस listen उत्सव का about पूर्ण the पूर्ण glories of that प्राप्त नहीं हो festival, th- we सकता। शास्त्रों cannot में लिखा है get the complete यह भगवत benefit कथा of that festival. उत्सव का प्राण होती है। So, the यदि pastimes उत्सव में related से to भगवत that कथा को निकाल day दो तो वो उत्सव प्राण हीन is हो जाता the है। life energy of that एक तो festival. अक्षय तृतीया अपने आप में ही इतना भव्य उत्सव, अक्षय तृतीया And Akshay नवरात्र Tritiya में is in इतना itself पावन a great, magnificent day. और इस पर And अब on top अक्षय of तृतीया that, की महिमा we are listening श्रीमद् भागवतम to और अन्य the glories पुराणों of पर आधारित श्रवण Akshay करते हैं। Tritiya through the medium of इसके Bhagavatam पीछे and other Puranas. एकमात्र जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की कृपा And that has been possible only by the blessings of Srila Prabhupada and the benevolence of the host family. आइए मैं आपको पुनः एक बार श्री वेदव्यास मुनि के द्वारा रचित मत्स्य So, पुराण में I लेकर want to take you again back to Matsya Puran that has been compiled by Vedvyas Muni
it mentions Vaishakhe Masitri Shuklaya Vaishakhe Masi Shuklaya Tritiyayam Janardanaha Brahmaloka Triprathagam Heji Brahmaloka Triprathagam Prithvi Vyama Avatarayat Prithvi Yama Avatarayat. वैशाख मासी शुक्लायाम, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया में, मतलब आज के दिन, so on this day, that is the Vaishak Mas Shukla Paksh, the third day, Tritiyayam. So till now we have listened to 18 glories or pastimes related to Akshay Tritiya. So we have to complete 25. So the 19th glory according to Matsya Puran, on this day, तीन पथ में गमन करने वाली, बहुत सुंदर शब्द है, Tripathgam. It is a beautiful word that means the Mother Ganga who crosses the three माँ गंगा इस पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। आज माँ गंगा का जन्मदिन है। So today is the manifestation day of Shri Ganga Ma, and today the Bhagirath, the king of the Sun dynasty, brought Gangaji on this earth from Brahmaloka. गंगा के विषय में अपने आप में ही मत्स्य पुराण में लिखा, गंगा कैसी त्रिपथगाम, तीन पथ में गमन करने वाली, अर्थात गंगा ब्रह्मलोक से चली। So Tripathgam means जल कैसे आया? ये गंगा जल कोई साधारण जल नहीं, she started from Brahmalok, and it is not any ordinary water. यद्यपि भगवान के शरीर से पसीना नहीं होता, So लेकिन Lord resides on the ocean, and it is said, although that the God never have sweat, but it is said that he Gangajal is from the sweat of the Lord. महरलोक, तपलोक, सिद्धलोक, स्वर्गलोक, And other pastime related to the same is that during the Vaman avatar, the Lord counted the whole material world in 2 steps, and by his thumb of the feet, the material world got broken, and from there the water of the Karan, the Akshay ocean, started coming. And this water is pious, and Brahmaji knew about the benevolence of this water, so he gathered it in his pot or kamandal. And that divine nectar. So in another Puran, it is mentioned that Radha and Krishna were so much engrossed in love of each other that they turned into a liquid state.
और वह जल और कोई नहीं, वह गंगा जल है। and that is Ganga Jal. तो ऐसा गंगा जल ब्रह्मलोक So में this ब्रह्मा जी divine transcendental कमंडल में धारण कर Ganga Jal और was ब्रह्मा जी held by प्रतिदिन Brahmaji इस in his गंगा pot, जल का पान करते हैं, and he आचमन करते हैं। drinks this water on a daily basis. He do veneration with this लेकिन water दूसरी ओर every day. इस And धरती on पर other hand, महाराज सगर के 60,000 Maharaj पुत्र Sagar भगवान 60,000 कपिल देव के sons अपराध से who जिनकी had मृत्यु offended हो गई Kapil और अधोगति Muni, नीचे की ओर and चले गए, they died because of the same सबका and उद्धार करने के went लिए to the lower planetary systems. महाराज सगर के So, पुत्र for अंशुमन their welfare, Sagar असमंजस ji's दिल्ली son अनेक लोगों ने प्रयास किया and कि हमारे his 60,000 पितरों का उद्धार हो, grandchildren and पर so on and so forth नहीं कर पाए। performed अंत में austerity to महाराज please दिलीप Gangaji. हुए And भगीरथ finally, Dilip भगीरथ जी ने Maharaj's king अपने तप son से माँ Bhagirath, गंगा को प्रसन्न by किया, his फिर austerity, गंगा माता को राजी made बना लिया और Gangaji ये धरती पर आ satisfied, and she agreed to come down on the earth. माँ गंगा ने दो शर्त रखी, संक्षिप्त में So इतना ही समझिए। Gangaji put two कहा कि conditions. ब्रह्मलोक से नीचे She said गिरूंगी that if I fall from Brahmalok, तो पृथ्वी को तोड़कर पाताल में चली जाऊंगी, then the मुझे force of पाताल my में water गिरने के won't लिए be able, मेरे वेग को, मेरे फोर्स the earth को won't be कम able to करना sustain होगा the flow, and I will ताकि go मैं to इस the lower देश को planetary ऊपर ले systems. सकूं। So I need something that can भगीरथ जी sustain शिव जी my के पास flow. गए, So Bhagirath went to Lord Shiva कहा महाराज आप ही कुछ कर सकते हैं। and requested him शिव to जी do ने something भगीरथ about जी को it. कहते कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था करता हूँ, गंगा को Shivji नीचे उतारो, यहाँ से could सूरज have चले said that जाएंगे। लेकिन he could have शिव said जी that I can make some अपने को arrangements जानते then हैं। that she can move. शिव जी But ने सोचा Shivji ये is जल quite aware of मेरे इष्ट the महाराज piety मेरे of ईश्वर भगवान विष्णु के Ganga चरणों ji. से स्पर्श होकर निकला है, He knows that this इसलिए इस water पवित्र जल is को coming by अपने ही touching the lotus feet हृदय of the Lord. मस्तक पर धारण That कर is लिया। why Shivji तो holds महाराज this ने holy तुरंत समझ water लिया on भगवान his शिव head. हैं। So तब in शिव जी Srimad स्वयं को Bhagavatam, बहुत there सुंदर is a रीति से देखते question हैं। that who is भगवान Bhagwan or the Supreme गंगा जी Personality के of Godhead. चरणों से निकले हुए So जल को Suji जब answers वो that कमंडल में धारण करते और रोज पूजा करते the हैं, Lord शिव is के the चरणों one से who निकले हुए जल को the शिव जी अपने water मस्तक that पर धारण comes करते from हैं। his lotus वो feet जिनके is हृदय held by में Brahmaji साक्षात in his भगवान pot हैं। and Shivji on his head. So that तो is शिव the जी Supreme मान Personality गए of Godhead भगवत or गीता में। Bhagwan. भगीरथ जी गए, गंगा जी ने कहा दूसरी शर्त यह है And the second कि जब मैं condition धरती पर was आऊंगी अनेकों पापी मुझ में स्नान करेंगे when I come down to और earth, फिर all भांति the मेरे पाप impious धोएंगे people और फिर गाना गाएंगे। आपके सबके मन में गाना आ गया है, पापियों के पाप धोते धोते will take a dip in my holy water तो and मैं तो pollute पापियों me. के पाप धोते धोते मैली हो जाऊंगी, मैं पापों से भर जाऊंगी। And I will become तो भगीरथ impure. जी मेरे So, पाप को दूर करने वाला कौन? how my impurities will be washed तब away? भगीरथ जी ने बहुत सुंदर कहा, Bhagirath replied महाराज beautifully. आप धरती पर आओगी, He said that आप में अनेकों when पापी स्नान you करेंगे, इसमें कोई come डाउट नहीं है। to earth, so many लेकिन impious आपके people, अंदर sinful अपने people will take a dip in राम your और holy कृष्ण water. के बड़े बड़े But शुद्ध along भक्तों with में that, स्नान great करेंगे। devotees of और हे the माँ, Lord, Shri जब राम और Krishna, कृष्ण Ram, का लाडला प्यारा भक्त आप में स्नान करेगा ना, तो वो and अपने when को they भी will take पवित्र a कर dip देगा। in your holy water, then he will क्योंकि purify your water as well. क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है, Because a भगवत pure गीता भागवता devotee तीर्थ of the कुर्वन्ति Lord स्वयं विभो, is कोई himself शुद्ध भक्त स्वयं अपने आप में तीर्थ होता है। equivalent to तीर्थम कुर्वन्ति the तीर्थानि, holy place दुनिया के जिस itself. किसी कोने में जाता है उस He, स्थान wherever को he वो goes, पवित्र, वो तीर्थ बना he देता है। क्यों? makes क्योंकि that
place न गदा भृगु, pious क्योंकि शुद्ध भक्त and हृदय pure, में भगवान as पूर्ण रूप से होते हैं। in his heart the Lord तो always आप भी ना manifests. अमृत चर्चा वाले शुद्ध भक्त हैं? ये बहुत शुद्ध, बहुत कथा सुनेंगे अमृत चर्चा में, ऑनलाइन में हैं? और फिर ये ऑनलाइन वाले कभी कभी आएंगे तो हे माँ गंगे, वो आपको भी पवित्र कर देंगे। So these listeners from Amrit Charcha will come and take a holy dip in your water and purify your water. भगीरथ जी ने कहा, So when Bhagirathi replied माँ thus, गंगा राजी हुई, then Ganga Ma आज के दिन agreed, and on this day मत्स्य पुराण में बहुत of सुंदर कहा Akshay गया, Tritiya, as mentioned in the verse in this Matsya from Matsya Puran, तृतीयायाम जनार्दनः, आज के दिन that ब्रह्म on लोकात्, today's संस्कृत day, के अनुसार देखोगे ब्रह्म लोकात् माने ब्रह्म लोक से, according to the Sanskrit, ब्रह्म लोक the से Brahma Lokat means that पृथ्वी the पृथ्वीयाम अवतरे Mother अवतरत, Ganga ब्रह्म लोक came से माँ गंगा down आज के दिन from पृथ्वी लोक Brahmalok पर अवतरित हुई, and पृथ्वी लोक पर manifested प्रकट to हुई। the planet Earth or यहाँ पर माँ Mother गंगा को Earth. गंगा भागीरथी नहीं कहा, So इस here श्लोक में she is माँ not गंगा को mentioned as Ganga त्रिपथगाम कहा गया है। or she त्रिपथगाम is not mentioned माने as पथ माने रास्ते, गाम माने गमन करने वाली, माँ गंगा Ganga or तीर्थयात्रा Bhagirathi, करती but है। she is referred here as ब्रह्मलोक से Tripathgami जब चली तो because पहले स्वर्ग में गई, she moves from ब्रह्मलोक से Brahmaloka and then स्वर्ग she में आई, सारे went to देवताओं को Swarg सौभाग्य देकर, and she provided इसलिए तो आपने सुना होगा welfare of the कि demigods. धन कुबेर और मणिग्रीव That गंगा is के why you स्वरूप might बन have के heard अपराध that कर रहे थे कि they, गंगा स्वर्ग में है। तो त्रिपथगाम शब्द पर कह the रहे sons हैं of Kubera, तीन were जोन, तीन जगह से गंगा offending बहती है, ब्रह्मलोक से चली, पहले स्वर्ग लोक में गई, and creating sins in holy river स्वर्ग Ganga, लोक से फिर and पृथ्वी because लोक she पर आई, is in Swarglok, और and पृथ्वी from there लोक she के moved बाद to नीचे Prithvi पाताल or में, earth, and जहां then पर she went शंकर के to 60,000 पुत्र the रह रहे थे, वहां पर तीन lower लोक, planetary systems where इसलिए the sons त्रिपथगाम of Sagar have moved. गंगा So जी that की is why बहुत she is बहुत called बहुत महिमा है। Tripathgami. और She ये is 329 very glorious. कथा है ना, And this is the 329th Katha. हमारे संजय भाई के द्वारा आयोजित So the ये 330th Katha ऑनलाइन कथा is होगी। again from Canada, इसके बाद Toronto. 331 नंबर की जो And कथा है, the 331 Katha ये एंड में हरिद्वार towards the end of गंगा के May तट in पर जाकर Haridwar होगी। will be on the holy banks of उस समय Gangaji. माँ गंगा की And महिमा at that time, हम आप सबको श्रवण कराएंगे, we will listen to the glories of Ma Ganga in detail. और जो So, नहीं आ सकते हैं वो whoever कृपा can करें, come हम वहीं should से come, सबके साथ जुड़ and जाएंगे, the others who cannot और make it, एक और गंगा we will बहती try होगी to और एक और connect कथा बहती you होगी all और एक और प्रसाद through बहता होगा। तीन internet. टाइम प्रसाद पाओ, तीन टाइम गंगा में स्नान करो और तीन So टाइम you will have an opportunity to take a holy dip सो गंगा in की बड़ी the महिमा है। holy waters and get हरिद्वार the में भी prasadam महिमा करेंगे। as well. तो जब गंगा शब्द मेरे सामने आया तो मुझे भगवान राम जी की याद आई। So when बहुत सुंदर I saw this भगवान word राम जी Ganga, जब वनवास में I जाते हैं remember the pastimes of Lord Sri Ram और जब गंगा के तट exile पर पहुंचते हैं, when he reaches the गंगा के banks तट पर of पहुंचते Ganga हैं, Ji. रामायण में कुछ इस प्रकार It is लिखा है, mentioned in आप Ramayana. सब The verse is in स्वागत front of your करेंगे। screen. गंगा सकल मुदमंगल मूला, गाइए, गंगा सकल मुदमंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब शूला।
हेजि सब सुख करनी हरणी स अबसूला माँ जनू कीन पंथाश्रम गयाऊँ माँ जनू कीन पंथाश्रम गयाऊँ शुचि जलू पियत मुदित मन भयऊँ शुचि जल पियत मुदित मन भयऊँ। भगवान रामचंद्र So Lord Ramchandra माँ सीता और अनुज लक्ष्मण के साथ is वनवास के दौरान with Ram, चलते चलते with his younger brother Lakshman, Sita ji, and while walking during his exile, he reached the banks of Ganga ji. And this verse was spoken by Lord Sri Ram himself. माँ गंगा कैसी है? ये सब मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ पता है? क्योंकि आज अक्षय तृतीया है। Why I am sharing this? Because today is Akshay Tritiya and it's his birthday. So we should learn about them. We should listen to their pastimes to get their blessings. That is why I'm sharing this with you. और जितना भी मंगल है आनंद और मंगल का मूल है माँ गंगा. So Ramchandra ji says that the base for हमारे जीवन में आनंद हो सकता है. happiness केवल आनंद से बात बनती नहीं है ना. and auspiciousness in our life is based on or is because of Ma Ganga ji's blessings. So, by the blessings of Ganga ji, we get the piety in material world, in spiritual world, and it gives happiness in material world as well. She provides all kinds of happiness. And she removes all our distress and obstacles. जब इस प्रकार से माँ गंगा का महिमावंत माँ गंगा का दर्शन किया. So when Ramji saw Ganga ji like this, so he didn't just sat there. Sometimes people go to the banks of Ganga ji and don't even take a holy dip. But Ramji, as soon as he said this, he took the holy dip in Ganga ji. So they all took a bath, and we all will be taking the holy dip on 28th May. And what did Ramji felt after taking the dip in the holy waters of Ganga ji? Ramji has started from Ayodhya and he had been walking for so long, so he was tired. But if we see on the spiritual platform, then he can never be tired. But because he is doing the हमारे जीवन में भी
श्रम नहीं the pastime, he's performing this pastime as a human in this material world. So he is जीवन में अनेकों tired जिम्मेवारी in. अनेकों प्रकार के कर्तव्य कार्य का श्रम So होता है as we all get tired with all our material responsibilities, but if such a person who is engrossed or tired of this material world कौन सी चीज है take the dip in the holy water, then they will get सारा श्रम दूर हो गया relieved of their stress. केवल And स्नान ही नहीं किया they not only took जल the का dip, पान किया but they also drank the holy water स्नान करने से of Mother शरीर Ganga. का श्रम दूर हुआ और So, गंगा जल का पान करने से बुद्धि by मन taking the भय holy dip, अंत में देखिए they got relieved of the tiredness, गंगा and जल का by पान करने से drinking the holy water, their heart मन became आनंदित हो गया ecstatic. माने मन में आनंद आ गया तो गंगा जी की सुंदर महिमा यहाँ पर हम देख सकते हैं So स्नान these करने से are शरीर the का श्रम दूर glories, करने से benevolence मन में of आनंद Ganga Ji. सारी फजीहत प्रॉब्लम तो मन की है And ये all दुख दे देता है मन परेशान our परेशान तो हम distress starts from our mind लेकिन गंगा जल and का पान heart. करने से But by drinking the holy waters of River Ganga, फिर our आगे mind and heart रामायण में लिखा है can be satisfied and कई ecstatic. कोटि कथा प्रसंगा ऐसा नहीं राम जी स्नान और पान करके वहां से चले गए And after that, he stayed there तट पर बैठकर and कहीं कोटि कोटि माने करोड़ों राम जी समर्थ है करोड़ों करोड़ों कोटि कथा प्रसंगा मां he गंगा की महिमा राम जी ने सुनाई shared crores of pastimes of Mother Ganga. राम जी गंगा की तरंग को देखते हुए गंगा जी की महिमा By looking at the waves of Ganga Ji, he shared the pastimes of Ganga Ji सचिव को अनुज अपने लक्ष्मण को और अपनी प्रिया सीता to जी को कथा Lakshman Ji and Sita Ji. नदी महिमा अधिकाई क्यों क्योंकि ये He shared the pastimes with Lakshman Ji and Sita Ji मिली है because this is देखा जाए तो ये river. गंगा नदी है किसकी इसका This अधिकार किसको है तो एक शब्द आप देखिए दूसरी लाइन में अर्धाली में प्रथम शब्द विबुध is not for human beings, विबुध नदी विबुध का अर्थ but है बुद्ध माने बुद्धिमान वी माने विशेष Buddhiman means intelligent and V means विबुध कहा गया ये विबुध माने देवता special. नदी है So this, नदी है so in लेकिन देव नदी our scriptures, Vibhudd means demigods. So this river belongs to demigods, but by the mercy of Bhagirath Ji, we humans are getting her. So we should utilize this opportunity. गरुड़ ध्वज गीता गायत्री और गौ माता ये सब ग से शुरू होते हैं ना So they all starts with गौ माता ग से G, ग से Ganga, Gayatri, Gita, Govind, गंगा and Ganga. ये 5-6 ग का आश्रय कर लेना And if we take shelter of these 5-6 things, then we will get relieved of this material world and proceed back to Godhead in Goloka. So this is the 19th glory about Akshay Tritiya. इस प्रकार से माँ गंगा आइए आज के दिन की और एक महिमा मेरा फेवरेट अवतार So let's listen to the other क्योंकि ये मेरे पंड में आता है मने हर में आवे ये बहुत of Akshay Tritiya. So a beautiful incarnation of the Lord Parshuram manifested today.
Ram, Bhriguvansh Tilak, amazing incarnation of the Lord. परशुराम जी ने जो फर्श उठाया और देश दुनिया के लिए जो काम किया, When Parshuram took the arms or his parshu, के विषय में जानते हैं, लेकिन he कुछ नया did amazing work. हो चुके हैं. You all might be aware of Parshuram, but you are in a habit of listening something new. अवतार है, So let me share a passage. न जाए, लेकिन 24 अवतार, So out of the 24 incarnations or 10 incarnations of the Lord, so Parshuramji is counted among the 10 incarnations of the Lord. फिर बचे 10, So remember, तो उसमें भी just परशुराम mind it that how much आप जानते हैं, importance Parshuramji has. मधुसूदन प्रभु जानते हैं. आप उंगली करके दिखाइए. मधुसूदन प्रभु की परीक्षा. चलो, परशुराम जी 10 अवतार में परशुराम जी कौन सा अवतार? 5 नहीं. और कौन बताएगा? 6 नहीं. આપણે સુરેશભાઈ 5 ને 4 9 નહીં. સુશીલા માતા કહે છે કે 5 ને 3 8 નહીં. लगभग तो सब वेरी गुड. हाँ, ये माता जी ने ठीक बताया. सो परशुराम जी जो है 10 अवतार में 7वें अवतार है, 7वें नंबर पर. इसका अर्थ ये भी नहीं होता कि परशुराम जी का अवतार 7वें. Parshuram ji is on the 7th position out of these 10 incarnations बाकी ये अवतार तो of the Lord. लहरे की तरह होते हैं. कभी ये हुआ तो कभी ये हुआ. भगवान थोड़ी ध्यान रखे पहला नंबर मारे बीजो नंबर तारो. यहाँ जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए भगवान धरती पे आ जाते हैं. वो नंबर ध्यान में नहीं रखते, लेकिन फिर भी जब आचार्यों ने गिनाया तो when Acharyas were counting, so Jayadev Goswami in his Dashavtar Stotra wrote Parshuram ji at 7th number. नई बात अभी मैं करने जा रहा हूं. तो ये 10 अवतार है, ठीक है. ये 10 अवतार में कोई ना कोई एक विशेष रस प्रकट होता है. And दूसरे शब्दों में in every incarnation there is किसी एक one अधिष्ठाता mellow that is prevalent. में प्रकट हुआ है. So फॉर एन एग्जांपल, they all have a अवतार में पहला predominating mellow in each incarnation. तो मत्स्य अवतार So in Matsya Avatar अधिष्ठाता है. कौन से रस के अधिष्ठाता है? is the presiding, a predominant कौन सा deity for विभत्स Vibhatsaras. याद आ रहा है. खैर, आपको तो ये सब, जब आपको एक्टर बनना होता है ना, देखो जीवन में किसी भी फील्ड में आप जाओ, शास्त्र का सहारा लेना ही पड़ेगा. Wherever you go in any field, you have to take the shelter of the Vedic injunctions. रौद्र रस, हास्य रस, विभत्स रस, हाँ? और एक एक रस को समझना है और फिर उसको स्विचिंग करने को भी आना चाहिए कि विभत्स है तो तुरंत. So for an actor, में से करुण, करुण में से you have to understand all these rasas and then you have to switch जो सारे from one mellow to another. अपने So a great actor is the one who knows all these mellows and he can manifest them and he can switch them from one to another. नहीं है, ये एक्टरों का विषय है. लेकिन किसी को एक्टिंग सीखनी है तो हमारे पास आ जाना, उनके ऊपर एक कथा करेंगे. ये रस के ऊपर एक कथा करेंगे तो ये ज्ञान हो सकता है. भागवत में क्या नहीं है, हैं? अब देखो विभत्स, जब आप एक्टिंग सीखोगे तो आपको कहेंगे चलो हास्य हास्य रस में आ जाओ, तो आपको स्माइल देनी है, हास्य रस की जो होती. करुण रस में आ जाओ तो मुंह बिगाड़ना, रोना है. Karun means you have to cry. And if we vibhatsa, then what is vibhatsa? विभत्स माने कोई गंदी चीज देखकर आपका मुंह कैसा होता है, जरा करो. So when you see something that is not good,
and your reaction for the same is vibhats. और उस गंदी सी गंदी वस्तु को Yes. देखकर जो रस मतलब जो जो आपका मतलब मुंह होता है उसे विभत्स कहते हैं। तो मछली मछली का शरीर साधारण So, a fish body, भारत में आप कभी or लोकल ट्रेन में सफर करो ordinary fish, तो if समझ you में आएगा travel कितनी गंध होती है और क्या। in Mumbai local, then you will understand what हम कभी कभी is the फ्रांस की smell लोकल ट्रेन of में a जाते fish. थे और When कभी we used to कभी गलती से travel, लगेज डिब्बे के बाजू वाला डिब्बा हमारे हाथ में आ जाता था और ट्रेन चलती और by वो the train, मछली की दुर्गंध जो आती है and by कितनी mistake, कितनी पुरानी सर्दी खांसी we होती है ना वो भी चली जाती है, बिल्कुल नाक खुल जाता है। खैर मैं ये कह रहा था we कि could दस smell अवतार the का fish. पहला अवतार है मत्स्य अवतार और So the मत्स्य first अवतार incarnation is मत्स्य रस Matsya को Avatar, दिखाता है। and he is the predominant deity for Vibhatse mellow, कुर्म अवतार अद्भुत रस के अधिष्ठाता है। and Kurma Avatar तीसरा is अवतार the है predominating वामन अवतार deity और of. महाअवतार भयानक रस के अधिष्ठाता है। अब आपको एक्टिंग क्लास में कहेंगे चलो भयानक रस प्रकट करो तो भयानक क्या होता है? तो ये भी समझना होता है। एक ये रस है भक्तों, ये एक शास्त्र है। So these mellows श्लोक और अध्याय इन are रसों पर बताए गए हैं। खास करके हमारे दक्षिण भारत के based जो on the Vedic injunctions. नृत्य करना भी कहाँ जानते हैं? खास करके दक्षिण भारत के जो नृत्य होते हैं The नृत्य में dance forms in South, all these सारे रस art forms कभी are दक्षिण taught. भारत की उस प्रणाली में आप दशावतार स्तोत्र पर डांस देखोगे ना, आज If you देखिए see the Dasha avatars तो ये सारे रस on वो आपके that, मुख पर then प्रकट करेंगे। you will मत्स्य see अवतार में all विभत्स these. प्रकट होगा, कुर्म अवतार में अद्भुत, फिर वराह So अवतार Kurma में avatar भयानक, is Adbhut लेकिन and Vara avatar is Bhayanak. आश्चर्यमय डालने वाला रस। चौथा अवतार है The नरसिंह अवतार। fourth is Narsingh. और यदि मैं आपको पूछूं And if I नरसिंह ask अवतार you किस रस के अधिष्ठाता है, what is the इसका उत्तर मैं नहीं दूंगा, predominant mellow, वो होमवर्क है। so this is the homework for today for all of you. क्योंकि प्राय हम लोग नरसिंह भगवान को उग्र समझते हैं, क्रोध Usually we उग्र think that he is चूथ दिया फाड़ दिया, Ugra or angry mood, अवतार जिस रस but में है, जिस भाव में what है, mellow is Narsingh avatar, it is different. कोई सीनियर भक्त से पूछिए, और Go and ask your senior devotees. So next katha of Narsingh Dev, we will discuss that in detail. फिर सातवां अवतार है राम अवतार। ये तो राम अवतार में अनेकों रस प्रकट हुए। So in Ram avatar there were many करुण रस mellows, प्रकट हुआ, but more करुण रस के Karun ras भगवान राम, देवी manifested. सीता का विरह हो, महाराज दशरथ की मृत्यु हो, वनवास The death of Dashrath ji, अपने परिवार भाई बंधु को याद करके remembering his family members in during exile. So he is the predominant deity of Karun or sadness. बलराम जी जो है The eighth is Balram, who is predominant for hasya or humor. Then the ninth is Buddha avatar, शांत रस के अधिष्ठाता है। who is predominant for Shant ras. कल्कि अवतार Then the 10th is Kalki avatar, who is लेकिन हमें presiding deity of Veer ras or bravery or courage. जिसका जो आज प्रकट हुआ, तो श्री परशुराम जी So Shri Parshuram ji is the presiding deity of Raudra ras. भयंकर रौद्र रस प्रकट लेकर प्रकट हुए परशुराम। भगवान विष्णु से That is प्रकट हुए anger. ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए कुश, कुश के पुत्र हुए कुशनाभ, कुशनाभ के पुत्र हुए गाधी, और गाधी की एक बेटी थी जिसका नाम था सत्यवती। So Gandhi had a daughter Satyavati. तो
he was a Kshatriya king and he married his daughter with Ruchik Rishi. And he was performing a fire sacrifice to get a great son. And at that time, his mother in law also came and she said that even I want a son. So they both, mother and daughter, sat in the fire sacrifice and he got the nectar from the yajna for both these women. He went to take a shower by giving the nectar to both of them. So Gadi's wife or Satyavati's mother, she said that this world is filled with selfishness. Your husband might have made a great nectar for his own son, and for us, maybe a little less potent. We are Kshatriyas and we need a benevolent son. So she said that let's exchange the nectars of this fire sacrifice. And they both took. And after a few days, Satyavati told her husband that the nectar that you gave, we exchanged. He became upset. He said that we are Brahmanas, so that we should have a Brahmana quality in our sons. That is why I gave the nectar accordingly, and vice versa. And now, as you have exchanged, so now we will have a son who has the qualities of a Kshatriya, and your mother will have a son with Brahminical qualities. So she said that no, I don't want a Kshatriya son. So he said that you have served me with all your heart, so I cannot do much. But if not your son, but at least your grandfather or grandson will be the one with qualities of a Kshatriya. So Maharaj Gadi got a son with Brahminical qualities, that is Maharishi Vishwamitra manifested. He was a Kshatriya, but became a sage. And Richik Rishi got Jamdagni with Brahminical qualities, but his son came with Raudra Ras, whose name is Parshuram, who manifested today on Akshay Tritiya. And he became the bona fide spiritual master of Bhishma. And even Karn, who has ability to kill the Pandavas, his guru also is Parshuram. So one time Jamdagni was organizing a fire sacrifice or yajna. And he sent his wife Renuka to fetch some water. So she went to get some water, and the demigods were there. She got amazed by seeing the demigods, and she became late. And Jamdagni became very upset and angry. He had 8 sons. He told his sons, your mother has offended me, and the auspicious time has passed for the yajna, so kill your mother.
But the sons said that how can we kill our own mother? We won't be able to do that. So Parshuramji was not there. He was out to fetch woods. When he came back, Jamdagni Rishi told, your mother has offended me and your brothers have offended me. So please kill them all. And he killed them. It is not something that we should follow. But Parshuramji is aware that his father was capable. So he fulfilled his desire and he will give me some benevolence. When Jamdagni became satisfied, he asked for him to ask for a benediction. And Parshuram said that, will you fulfill all my benediction? He said that, can you please make my mother and brothers back into life? And they should never know that I have killed them. So Jamdagni made them alive again. A beautiful verse from a sage from South India who wrote in one verse about Parshuram and revealed his whole life. परशुराम जी को यदि स्मरण करना हो ना, ये श्लोक नोट कर लीजिए, और आपके पास ये श्लोक होगा ही नहीं, क्योंकि ये बहुत दक्षिण भारत के एक महान संत के द्वारा लिखा हुआ बड़ा दुर्लभ श्लोक है भक्तों. This is a very rare verse which I am sharing today. क्रोधाग्निं जमदग्नि पीडन भवम् संतर्पयीशन् क्रमात् अशत्रामिह सन्ततश इमामाम् त्रिसप्तकृत्वक्षितिम् दत्वा कर्माणि दक्षिणां क्वचन ताम् आस्कन्दसिन्धुं वसन् अब्रह्मण्यम् अपाकरोतु भगवान् आब्रह्मकीटं मुने आब्रह्मकीटं मुनि. क्रोधाग्निम जमदग्नि पीडन भवम. बहुत सुंदर कहते हैं कि एक समय की बात, It says that once upon a time, भवम, एक समय की बात किसी ने परशुराम जी के पिता जमदग्नि मुनि, once upon a time, Jamdagni Muni, father of Parshuram, was given distress, or they killed him. So what happened was, Sahasrabahu, who had prayed to the Dattatreya Lord and got 1,000 hands and conquered the whole three worlds, and he was going back to his kingdom. So his soldiers were famished. So they stopped at Jamdagni's hermitage and told that, can you offer us some food? So he said that, yeah, we can
स्वरुचि माने जानते हैं? एक होता We है will give you the food, whatever you desire. Swaruchi. और दूसरा One is the जितने whatever पेट is भरे available, मेनू we feed देना you. और Other जिसको is जो to give रुचि them चाहे menu, जो and चाहे whatever they like, वो बना बना कर खिलाना। that give should be offered to them. That हजारों is रिश्तेदार थी, Swaruchi. सबने डिमांड की With और जिसको thousands जो of जो people, भोजन चाहिए था and जमदग्नि whatever ऋषि ने they desired, पेट भर कर खिलाया। Jamdagni Rishi offered them. सहस्त्र बाहु कार्तवीर अर्जुन परेशान, ये फक्कड़ And बाबा जंगल में Kartafir रहते हैं Arjun और or फिर भी इतना Sahasrabahu स्वादिष्ट भोजन कराया, got हम लोग amazed. जंगल में रहकर भी How is इतना it possible स्वादिष्ट that ऐसा भोजन नहीं he's खा living in a सकते? hermitage and he पूछा is able to फिर इसका do कारण क्या है? offer the food in such a manner जमदग्नि grandeur ऋषि ने कहा that even we cannot do while we are living in नंद की palace. गाय है, So कामधेनु Jamdagni गाय Rishi है, said that I have ये a गाय Kamdhenu दूध तो देती है, cow. She लेकिन not साथ only ही gives साथ जो milk, तुमको जैसा but चाहो she also वैसा gives अन्न भी प्रदान करती whatever है। food we अब इसकी require. बुद्धि बिगड़ी, So बोले तो ये गाय मुझे दे दो, the king became corrupted. He said that नहीं महाराजा, give me that cow नहीं नहीं मुझे as नहीं, it will be नहीं beneficial देंगे, for दो us. नहीं देंगे। So छीना जब छूटे Jamdagni Rishi और refused, कार्तवीर अर्जुन and अभिमान Kartavir में Arjun, हाथ में in his तलवार लेकर pride, जमदग्नि took ऋषि the को sword मार दिया। and he killed Jamdagni Rishi. इसे क्या कहते जानते हैं? जिस थाली में खाया उसी में किया छेद। बिल्कुल ये कहावत इस पर फिट हो जाती है। This is what इतना सुंदर भोजन कराया is साधु ने, called साधु को ही मार दिया। taking ऐसी advantage मूर्खता of दुनिया में someone कहीं जगह नहीं who है। have given, जिस whose गुरु salt से, you have eaten. जिस भक्त से हम भक्ति सीखते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं, So फिर when उसी की we निंदा, get उसी के विषय में knowledge बुरा कहना, from ये सब सहस्त्र बाहु someone की औलाद है। and इनको then नरक में criticizing the same ये तो guru जिस थाली में खाना वहीं पर are छेद कर the देते हैं। category of Sahasrabahu or are the sons of तो Sahasrabahu. अब तो क्या हुआ? अब वो So now what सहस्त्र happened? कामधेनु गाय को लेकर चला गया। He परशुराम took जी the घर पे नहीं थे, Kamdhenu cow. Parshuramji was not वो लकड़े at काटने home गए at that time. और जब आए तो दूर से देखा When कि he अपनी came, माँ रेणुका रो रही है, his mother अपनी Renuka was छाती पीट crying रही है। and she was जाकर पूछा माँ क्या हुआ? बोले सहस्त्र बाहु in कार्तवीर अर्जुन agony. ने तुम्हारे पिता को मार दिया। And he asked what happened, and और उसी she समय told that परशुराम जी Sahasrabahu has killed अपना फर्श your उठाया husband. At that और अपना moment, फर्श he took उठाकर his farsu अपने फरसू से आप श्लोक देखिए, and क्रोधाग्निम, क्रोध की अग्नि में फड़कने लगे he और was burning क्रोधाग्नि in जमदग्नि पीडन भवम anger. संतर्पयिष्यन् क्रमात्। सबसे पहले सहस्त्र बाहु की सहस्त्र भुजा को काटा, So first of all, सहस्त्र he बाहु का वध कर दिया, cut off उनके जितने भी all संतान थे his उन सबको hands. मार दिया। Then he killed him, और his उस समय sons, क्षत्रिय लोग, क्षत्रिय की and का धर्म होता है देश की the रक्षा करे, Kshatriyas at समाज that की point of रक्षा time. करे, ब्राह्मणों की रक्षा करे। They are supposed to और जो protect the क्षत्रिय Brahmanas, होकर ये cows, क्षत्रिय धर्म etc. नेताओं को लागू पड़ता है। So these ये जो नेता Kshatriya थे dharma परशुराम is to जी be का followed विचार by क्या था? today's politicians. परशुराम जी का विचार था कि So क्षत्रिय का Parshuram धर्म ji है देश, thought देश that की गाय, देश के ब्राह्मण, the देश के बच्चे, देश की स्त्रियों Kshatriya की रक्षा should करे, protect the और जो क्षत्रिय country, नहीं the करते cows, the उनके जीने sages, का and कोई the women, अधिकार नहीं है। and those who are not उठाया following परशु, their उस समय के responsibility जितने भी have क्षत्रिय no थे अपने point परशु in से सारे living. क्षत्रियों का So वध कर he दिया। परशुराम नाम सुनकर क्षत्रिय कांपने लगे, killed all the नाश कर Kshatriyas. दिया और वो He राज्य destroyed the ब्राह्मणों Kshatriya के हाथ में clans दे दिया। and he gave that kingdom लेकिन to धीरे the धीरे फिर से Brahmanas. क्षत्रियों का जन्म होने But लगा gradually, और फिर again से the क्षत्रियों का Kshatriyas उत्थान हुआ, started फिर से क्षत्रिय अपना rising, धर्म चूके, फिर से and परशुराम ने again परशु उठाया और सारे they क्षत्रियों का lost ध्वज किया। दूसरी their लाइन में देखिए, responsibility, इह माने इस धरती को and अक्षत्रिय माने क्षत्रिय विहीन बना दी। he again killed the Kshatriyas जिस धरती में and हम made लोग this रहते हैं earth इस धरती को devoid of the परशुराम जी ने Kshatriyas. क्षत्रिय विहीन कर दी। कितनी बार? बोले And how many त्रिसप्त times? कृत्व क्षितिम, इस पृथ्वी को त्रिसप्त, सप्त माने 7, त्रि माने 3, 7 So, into 3 कितना होता है?
3 Satvi means 3 into 7, that is 21 times he destroyed the Kshatriya clans and he gave this earth to Brahmanas. In the interpretation, the same Acharya writes that he killed so many Kshatriyas. Where did he took them and killed them? So he took them to Kurukshetra and killed them. Kurukshetra became red with the blood of the Kshatriyas. It is said that Parshuramji had such a pious deed. That is जहां पर दुष्टों का विनाश किया था और why that place is considered pious till today. And that is the place Krishna chose, that place to kill the demonic people. 21 बार धरती को नशत्री करने के बाद क्या किया? तीसरी So after killing the Kshatriyas 21 times, what did he do? कर्माणि दक्षिणाम. उसके बाद क्या किया? बोले ब्राह्मणों को बुलाया और He called the Brahmanas, जो यज्ञ आदि करते थे, called Kashyap Rishi, और पूरी धरती कश्यप ऋषि को दान में दे दी. and he gave all the earth to Kashyap Muni as charity. को मारा, धरती परशुराम की, तो परशुराम जी ने धरती कश्यप ऋषि को दान में दे दी. अब धरती दान में दे दी तो चाय से ज्यादा किटली गर्म होती है. बाकी के ऋषि मुनि कहने लगे परशुराम जी आपने तो अपनी सारी Other sages said that you have given everything to Kashyap Muni, so now where are you going to stay? बोले मैं यहीं कहीं रहूंगा. बोले ये तो आपने दान में दे दिया, पृथ्वी तो आपने दान में दे दी. अब जो जो चीज Said that now that you have given this whole earth as charity, so you cannot stay here. You should not use that place, because if you have given something in charity, you cannot reuse that. परशुराम जी सोचे अरे बाप रे क्या करें. परशुराम जी ने अपना फरसू जोर से फेंका समुद्र में. So Parshuram threw his parsu. He has given the earth, not the water of the sea. So he threw his parsu in the sea. जितने गर्म होते थे ना उनका फरसू भी उतना गर्म होता था. तो वो फरसू जैसे ही समुद्र में गया वहां का आजू बाजू का पानी सोख लिया. So it soaked all the water because that parsu also was उतनी जगह जो थी hot, भूमि की तरह हो गई and that place हो गया और वहां पर्वत बन गया. became a mountain, और परशुराम जी ने उस पर्वत का आश्रय लिया. and he took the shelter of that mountain. नहीं दिया था तो समुद्र में परशु फेंका, वहां से पर्वत और उस पर्वत पर परशुराम जी रुके. शास्त्रों के अनुसार वो पर्वत और कोई नहीं, वो And according to the Vedic injunction, it is Mahendra Parvat. में यदि देखा जाए And in present, this place is, उसे परशुराम देशम, it is called Parshuram Desham उस दिव्य देशम में in south, परशुराम देशम है जो केरला में पड़ता है, which is in Kerala, जो परशुराम जी का स्थान है. and it is present till date. And lastly, जी को प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अब्रह्मणीयम we should pray to such Parshuram. हे भगवान, Oh Lord, ब्रह्मा से लेकर चींटी तक सबके दुखों को दूर किया. you have removed the distress of प्रभु आपने Brahma to a small ब्रह्मा से लेकर कीट तक आपने insect or ant. के लिए सोचा. मैं आपको प्रार्थना करता हूँ So I pray that please मैं भी आपकी भक्ति कर सकूं, bless us that we are able धन्य कर सकूं. to pray to you and make our आज इस life प्रकट हुए भक्तों, successful. आज जिस प्रकार से देश और दुनिया की स्थिति है, किसी परशुराम की आवश्यकता है. So the situation in today's world is no different than the situation that was there. Jadev Goswami has sung the glories of Parshuram ji as follows in the below screen. क्षत्रिय रुधि रमये जगद
पगपापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम क्षत्रिय रुधिरमये जगदप गत पापम स्नपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। गाइए। केशवधृता भृगुपतिरूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं क्षत्रिय रुधिर रमये। So Jaidev Goswami writes, रुधिर रमये, क्षत्रियों के खून से खेले। he played with the blood of the Kshatriyas. क्षत्रिय रुधिर रमये, क्षत्रियों का विनाश करके He destroyed the Kshatriyas जगत पापम, उन्होंने जगत के पापों को दूर किया। and he removed the sins of this earth. He didn't remove the Kshatriyas, but the sins of this material world. जगत पापम, जगत के पाप को दूर किया और स्नपयसि पयसि शमित भवतापम, और ये सारा विनाश कुरुक्षेत्र की भूमि पर किया। And he did all of this on the land of Kurukshetra. And if someone resides in Kurukshetra or drinks the water from Kurukshetra, then all the distress of this material world is removed for them. So such Bhagwan who took the form of Parshuram is glorious. So on this day, Parshuramji manifested. So let's listen to another glory of Akshay Tritiya. So the 21st glory is on this day, Lakshmi ji provided unmatched wealth to Kuberji. He became the god of wealth. हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के कान से मैं कुबेर जी का परिचय दे रहा हूं आपको। So it so happened कुबेर को संपत्ति मिली थी, तो ब्रह्मा के कान से पुलत्स्य ऋषि का जन्म हुआ। आप जानते हैं ना, ब्रह्मा की गोद से। So from Brahmaji's ear, Pulasya Rishi manifested. तो ब्रह्मा जी के कान से पुलत्स्य हुए और पुलत्स्य ऋषि के एक साधु पुत्र, And Pulasya Rishi had a devotee son के पुत्र हुए विश्रवा, whose name was Vishrava. और विश्रवा की दो पत्नी, विश्रवा की एक So पत्नी Vishrava had two जिसका नाम wives. कैकसी। One wife was demonic विष्णु से or was ब्रह्मा से पुलत्स्य, पुलत्स्य से the विश्रवा, daughter of the demons whose name was Kekasi. कैकसी, और कैकसी से रावण जन्म And लिया। Keksi's son was Ravan. कुल में रावण का जन्म हुआ। तो विश्रवा की ही पत्नी थी कैकसी, जिससे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा, Kumbhakarna, Shupnakha और वही were born to her. ऋषि की दूसरी पत्नी, जिसका नाम था इलविद, And the other wife was Ilvid. ये कुबेर जी
का प्राकट्य हुआ। who कुबेर we जी ने got देवाधिदेव Kuberji, महादेव की उपासना की। and महादेव को बहुत लंबी लंबी कथाएं हैं। he performed austerity और उनकी एक for समय Shiva, दृष्टि पार्वती के ऊपर गई तो एक दृष्टि जल गई, फिर से तपस्या की and he और बहुत saw सुना Parvati ji कि with his देव one को eye, 9 which was प्रकार की destroyed, निधि प्राप्त हो गई। and he again 9 performed निधि। austerity to Shivji, and एक he बार हमारे got महात्मा Nav श्रीमती Nidhi. रेशु माता ने पूछा था कि ये So 9 when निधि क्या होती है। मैंने कहा था कल बताऊंगा, फिर वो कल आया ही नहीं। few months back she asked what is Navnidhi, so I told I will tell tomorrow, but I forgot. So today I got a chance, so let me share it with you. ये 9 निधि हनुमान जी के पास है। So these same Navnidhi are with Hanuman ji as well. तो ये 9 के 9 निधि हमें प्रदान कर सकते हैं। If Hanuman ji desire, then he can हनुमान provide चालीसा में जो वर्णन this है। Navnidhi to us, 9 प्रकार की, which is इसमें mentioned in Hanuman Chalisa. मुझे ज्यादा डीप में जाना नहीं है, लेकिन केवल 9 निधि को मैं आपको गिना दूं कि 9 So प्रकार let की me निधि just को जो share प्रदान the से 9 होती है। types of wealth, opulence, that is Navnidhi. पद्मश्च शंखो पर मकरकच्छपे मुकुंद कुंद नीलश्च खर्वश्च निधियो नव। 9 प्रकार की निधि। पहली निधि है महापद्म। So the first opulence is Mahapadma, महापद्म निधि 7 पीढ़ी तक चलती है। which इसको मिल जाए तो if 7 someone पीढ़ी receives तक चलती है। can be carried forward for 7 generations. इसमें है, लेकिन केवल नाम गिना दूं। Let me just give you the names. So the first is Mahapadma, सिद्धि 9 निधि जो कहते हैं। then is अच्छा, Ashtasiddhi. शब्द निधि का मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए। So what is Nidhi निधि first? शब्द जो Let's है understand संस्कृत that. है So Nidhi is और a इसका Sanskrit विचार word, करेंगे तो 3 and शब्दों if we में break this नी, word, दा then और Na, ई, Da or E. नी द ई। Na, इसमें Di, नी जो है वो Da, उपसर्ग है E. और दा धातु तथा उसके प्रत्यय के मल से बनता है। तो निधि का अर्थ होता है आश्रय, So आधार, भंडार। So Di is ashray or shelter, माने आगार, भंडार। or तो ये 9 प्रकार के भंडार, 9 so these प्रकार की 9 निधि types of कुबेर जी को प्राप्त हुई। collection, कुबेर bandar, जी के पास है। तो पहली are with निधि का Kuberji. नाम है So the महापद्म, first is दूसरी है Mahapadma, पद्म, second is तीसरी Padma, है third is शंख, Shankh or the चौथी conch, है मकर, fourth is Makar, पांचवी है कच्छप, then छठवी Kachap, है मुकुंद, then सातवीं Mukund, है कुंद, then आठवीं है Kund, नील eighth और is Neel, नौवीं है and खरवर। ninth is Kharvar. महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, खरव और नील। इस प्रकार से ये 9 प्रकार की निधि है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि हमको ये 9 So निधि, sometimes people think that if we get these 9 types of opulence or Ashtasiddhi, और कुछ लोग इस निधि और सिद्धि के चक्कर में then पड़े रहते हैं। we'll have a successful life. लेकिन People हमारी get गुरु जी entangled ने in क्या the कहा, प्रभु आप ये entangled निधि, in सिद्धि, Nidhi and 8 Siddhi. सिद्धि But और 9 what निधि Kunti देना ji said, that even if you want to give me Ashtasiddhi or Navnidhi, I don't desire the same. If you want to give, then give me your devotional service or your darshan. क्योंकि जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी ये Why? नैवाहत्यम विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। क्योंकि ये अष्ट सिद्धि 9 निधि जो है ना,
अभिमान This प्रकट कराए, Ashtasiddhi or Navnidhi give भक्ति में us बहुत बड़ा खतरा है। pride, and they became a great वैष्णव जन obstacle कौन in कुबेर? unalloyed devotion. And the भाई कुबेर को example पहचानना, is जागा आपको Kuber. पहचाना। कुबेर, इसका नाम क्या है? बोलो आप लोग अपने आप में, क्या नाम है? Kuber. What एक्चुअली इसका नाम क्या है पता है? कुबेर। his actual name is Kuber. और फिर अपभ्रंश भाषा में कुबेर का And कुबेर हो it गया। got distorted and गूगल became करोगे तो भी Kuber. पता चलेगा, वहां कुबेर लिखा होगा। एक्चुअल नाम है कुबेर। फिर हम लोग कुबेर His actual name is Kuber. अच्छा, कुबेर, इसका नाम कुबेर क्यों है? And why is he called Kuber? गंदा। Ku means और bad, वेर माने आप तो जानते ही हैं, unclean, किसी से and वेर करना। Ver means इसके पास enmity. इतनी संपत्ति है, He has so much opulence and wealth. He has Ashtasiddhi and Navnidhi, कुबेर, but his name is Kuber. बुरा वेर करने वाला। ये बात है भक्तों, जिनके पास धन होता है, Who has opulence or wealth, एक दूसरे से वेर होता है। they automatically get enmity against each other. A person who is rich has far more enemies than a poor person. धनी लोगों के जितने दुश्मन होंगे, गरीबों के नहीं। अब कुबेर कितना धनी, इसलिए इसका नाम ही क्या हुआ? Kuber is so wealthy that his name is Kuber. A person who has who is enemies, who holds enmity towards others. So, if we get wealth, opulence, then we should use that money to serve the sages and saints. And if we really want to ask something from the Lord, कुबेर को हम रोज याद करते हैं, दुनिया वाले then we कुबेर, should ask for devotional service. लेकिन हम लोग कुबेर को याद करते हैं, We also remember Kuber, कहाँ याद करते हैं? but not for his opulence. कुबेरात्मजो बद्ध मृत्येव यद्व त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्व कामे प्रयच्छ तथा प्रेम भक्तिं स्व कामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। सत्यव्रत मुनि, ये जब हम गाते हैं So, Satyavrat. So, we sing this in Kartik month. Satyavrat Muni says, Kuber Atmaj, that is his sons, Nalkuber and Manigriv, were inert like an idol, लेकिन त्वया मोचितो, लेकिन आपने उसे मुक्त कर दिया। हे प्रभु, उस वृक्ष में यमलार्जुन के रूप में मूर्ति they were inert के दोनों बेटे बंधे हुए थे, as idol in the trees, but you not only freed them, but also gave your devotional service. भक्ति का भागी कर दिया उस कुबेर के दोनों पुत्रों को। प्रभु, आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ। So I pray at your lotus feet that in the same manner we are also entangled in this material world and responsibilities. But please bless us and detangle us from this material obligations and give us unalloyed devotional service. We
don't need Navnidhi or Ashtasiddhi. We don't even need liberation. We need your pure devotional service. तो इस प्रकार That is how a Vaishnava remembers कथा में Kuber. ज्ञान प्राप्त हुआ। और भी कुछ बातें बाकी हैं, ये कथा हम सुनेंगे एक छोटी सी सूचना के बाद। So छोटी सी सूचना, there are a few भगवत more. कथा। We will continue after some small information. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna। So बहुत बहुत धन्यवाद डिस्कर्स लाल गोविंद जी का कि हम यहाँ पर इस पावन अक्षय तृतीया के महिमा को आस्वादन कर रहे हैं। और इसी महिमा के अंतर्गत हमने बहुत ही सुंदर महिमा आस्वादन की कि कैसे 19वीं महिमा जो माँ गंगा का अवतरण और इसी से रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हमने श्रवण की। भगवान राम स्वयं इस गंगा नदी में जाकर स्नान करते हैं और जो भगवान शिव जी है उन्होंने इसके किस प्रकार धारण किया तथा ब्रह्मा जी ने इसे अपने कमंडल में धारण किया, ये सारी लीलाओं को हमने आस्वादन किया। और इसी के साथ बहुत ही सुंदर भगवान परशुराम का ये जो अवतार की कथा हमने श्रवण की। तो और अभी हम श्रवण कर रहे हैं अन्य कथाएं इसी से रिलेटेड, इसी लीलाओं के अंतर्गत। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। ये जैसे आपने बताया ना कि ये जो पावन पर्व चल रहा है, यदि हम उसकी महिमा श्रवण करते हैं तो वास्तव में वो पर्व हमारे लिए पर्व बनता है। तो थैंक यू वेरी मच कि आप समय निकालकर हमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल श्लोकों के साथ में एक एक शब्द का आस्वादन कराते हुए हमें आस्वादन करा रहे हैं। तो वेरी ग्रेटफुल प्रभु जी। एंड बहुत ही सुंदर हमारे आज यहाँ पर ये जो अक्षय तृतीया का पर्व हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसी के अंतर्गत बहुत सारे भक्त हैं जो कि हमारे साथ में इस अक्षय तृतीया के पर्व में हमारे साथ में जुड़े हैं सेवा के लिए। और भी अनेक भक्तों को हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप यदि प्लीज जुड़िए, क्योंकि ये पर्व है हम आज भी सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि भारत के कुछ प्रांतों में ये आज भी है। तो बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है कि हम ऐसे पर्व को जिसकी महिमा अक्षय है, जिसमें सेवा करने से, जिसमें कुछ योगदान करने से अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति होती है तथा भगवान की शुद्ध भक्ति मिलती है। तो ऐसे पर्व में हम सबको मिलकर और अधिक सेवा करना चाहिए और अधिक आगे आना चाहिए। सो आप सबसे यही निवेदन है कि आप जरूर इसमें अपना सहयोग कीजिएगा। और साथ ही साथ हम कुछ दर्शन भी करेंगे गौशाला के, जो कि हम यहाँ पर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज ये अक्षय तृतीया के दिन की सेवा है और भी ये एक दिन और भी चलने वाली है। तो आप सभी व्यक्तों से और भी निवेदन है कि आप अवश्य इसमें जुड़िए और एक और जो अवसर हमें मिला है उसे ना गवाएं यदि आपने मिस कर दिया है, क्योंकि अभी भी अमेरिका के प्रांत में तो ये रात है। तो ये सेवा आप सबसे निवेदन है जारी कीजिएगा। और मैं स्मरण करना चाहूँगा हमारे इस परमार परिवार का जिन्होंने यह सहयोग किया है। साथ ही साथ में बहुत सुंदर हमारे ये जो अमृत चर्चा परिवार के बहुत सारे भक्तों ने इसमें अपना योगदान किया है, तो उनको भी मैं धन्यवाद करूँगा। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करना चाहेंगे हमारे गीता माता जी जो कि हॉलैंड से हैं, नेदरलैंड से हैं, उनके पिताजी का देहांत हुआ, बाबूजी का, धनजी गोविंद जी प्रभु जी। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि आप सब उनके लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा। हमारे गौशाला के बहुत ही सुंदर भक्त हैं ये अमृत चर्चा परिवार के, और बहुत सुंदर ये जो नेदरलैंड के सारे भक्त वृंद हैं उनको हमारे गौशाला के साथ में जुड़ा हुआ है उन्होंने सेवा के लिए। तो ऐसे भक्त जो कि नित्य रूप में भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि वो भगवान की सेवा में लगे रहें, भगवान के चरण कमलों की सेवा में बने रहें, ऐसी कामना। और आप सभी वैष्णव से भी हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें उनके लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा ताकि वो भी भगवान की भक्ति, प्रेमा भक्ति में लगे रहें। साथ ही साथ कुछ जैसे प्रभु जी अभी बता रहे थे कि अक्षय तृतीया की कुल 25 महिमा है, बट अकॉर्डिंग टू अस जो कि शास्त्र में नहीं लिखा है, परंतु ये हमारे गोविंद टीवी के शास्त्र में एनरोल हो चुका है कि 26 महिमा है। तो जो 26 महिमा में आपको डायरेक्ट बता दूं वो ये है
कि श्रीमान लाल गोविंद प्रभु जी के जो प्रिय पुत्र है करुण केशव प्रभु, उनका जन्मदिन है इसी अक्षय तृतीया के दिन। तो हम उनके लिए भी विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु जी के ही पद चिन्हों पर चले और हमें ऐसी दिव्य कथाओं को आस्वादन कराते रहें, प्रभु जी की ही परंपरा को ये आगे बढ़ाते रहें। तो विशिंग अ वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे टू करुण केशव प्रभु। उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ हम प्रार्थना करना चाहेंगे हमारे सपना शाह माता जी, जिन्होंने बहुत सुंदर वेंचर स्टार्ट किया है अगेन इसी अक्षय तृतीया के दिन पे। तो उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि माता जी आपकी जो भी मनोवांछित कामना है वो पूर्ण करे भगवान। जो आज के दिन आपने यह सुंदर सेवा भी की है, बहुत सुंदर हमारे यमुना और वृंदा का माता जी ख्याल रखते हैं श्री राधा गोविंद गौशाला में, और बहुत सुंदर सहयोग है और बड़ा भाव है माता जी का। तो उनके लिए भी प्रार्थना कि आपकी ये जो नया वेंचर स्टार्ट किया है उनमें बहुत उन्नति हो आपकी। थैंक यू वेरी मच। और आप सभी भक्तों से भी हम पुनः एक बार निवेदन करना चाहते हैं, यदि आपने हमारे साथ में आज इस अक्षय तृतीया के पावन उपलक्ष्य के दिन में, पर्व के उपलक्ष्य में यदि फिर से हमारे साथ में जुड़कर सेवा करना चाहते हैं, यानी अभी तक आपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, तो आप इसमें अवश्य कीजिएगा। और अक्षय तृतीया जिसमें हम बहुत ही सुंदर सेवा कर रहे हैं, गौ और वैष्णव की महिमा है, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इसमें अवश्य जुड़िए। यदि आपने अभी तक अपना सहयोग नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा। और इसी सहयोग के लिए यदि आप हमें अप्रोच करना चाहें तो आप जरूर अप्रोच कर सकते हैं ऑन 7567545555, which number you can see in the screen here on। साथ ही साथ +2012150913 इन दोनों नंबर के माध्यम से आप हमें अप्रोच कर सकते हो। और यस, यदि आप भी जैसे हमारे सपना शाह माता जी हैं, जिन्होंने इस प्रकार गौशाला में इस सुंदर बछड़ों की सेवा का लाभ लिया है, जैसे हमारे नीलेश भाई तथा बहुत सारे भक्त हैं, जैसे नीलेश भाई है टेनेसी से, उन्होंने भी सुंदर सहयोग किया है। उन्होंने भी इसी अक्षय तृतीया के दिन पे एक सुंदर काफ की सेवा ली है अडॉप्शन की। और साथ ही साथ हमारे Patel family from one more Tennessee, Tejal Patel Mataji, they also, took an opportunity to serve a calf through a lifetime। वैसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि हमारे राधा रानी माता जी न्यूजीलैंड से, और बॉस्टन से हमारे तृप्ति माता जी, ये सारे सुंदर भक्त हैं जो कि इस प्रकार इन बछड़ों का ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। तो आप सबसे भी निवेदन है, प्लीज आप भी अवश्य अपना योगदान करें और इस प्रकार ये जो हमारा परिवार है, गोवंश है, उनको हम प्रसन्न कर सके, हम उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर सके, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो और हमारे जीवन में भी कृष्ण की शुद्ध भक्ति हो। और ऐसी आप सबसे कामना करते हैं, तो प्लीज अवश्य सहयोग कीजिएगा। और आइए अब अधिक समय ना लेते हुए हम श्रवण करते हैं आज की इस कथा को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री अक्षय तृतीया की 21 महिमा हम सब ने सुनी। अक्षय तृतीया की 22वीं महिमा। So we have heard about the 21 glories of Akshay Tritiya so far, and on this day the son of Dharma and Murti, Nar and Narayan, manifested. So in Bhagavatam's 4th canto, there is a pastime
From Vishnu, Brahma ji originated, and then Manu, and Manu had 5 sons, 5 kids, out of which he had Prasuti, who was married to Daksha, and Prasuti had 16 daughters, and of these, the 13th daughter was Murti, who was a sister of Sati, the wife of Lord Shiva. शिव जी की पत्नी सती की 15 बहन है, इसलिए तो यज्ञ में जाना था ना, मेरी बहन आई होगी, उनके बच्चे मेरे भांजे आए होंगे. Sati had 15 sisters. That is why she wanted to go to the yajna to meet all her family members. So the 13th daughter of Daksh and Prasuti was Murti, who was married to Dharma, that is righteousness, and they begot 2 sons, Nar and Narayan. So the Lord manifested so to kill the Sahastra Kavach demon who had got benediction from Lord Shiva and was distressing the Brahmanas. And another reason was for his manifest was to perform austerity in Badrika ashram to remove the sins of this river. Until date, they are performing austerity in Badrinath Dham. For the whole world, they are performing the austerity. So, he performs austerity for 365 days. And if you go for one day, Badrika ashram, then the whole year of austerity that he has performed, we can get by just having his darshan. So you come with me to Haridwar and take the benefit of this katha and yatra. So on today's date, Shri Vedvyas Muni took the holy dip in the Mandakini river, and he was in trance and he saw Maya Devi, and he saw that the people will get, the living entities will get entangled in Maya or the material energy of the Lord. So in his trance, he started speaking Bhagvatam, and at the same moment, Ganesh ji, the son of Uma, started writing what Vyasmuni is writing in his he's speaking in his trance. So it is mentioned that today Gajanan Ganpati started writing Bhagavatam today, and on this day he started writing Mahabharat as well. So Vyas Muni was speaking, but Ganesh ji was writing, and he wrote both Mahabharat and Bhagavatam on this day. Then there is another glory. So we have Char Dham. So throughout the year, the demigods come down and serve the Lord. But for 4 months, these Char Dhams gates are opened for
public. In Uttarakhand are these 4 Char Dham, and they are opened from the day of Akshay Tritiya. So all the demigods leave, and from Akshay Tritiyas, so from Haridwar, we can go to all these 4 dhamas. So the 25th glory is Narsimhadev, who manifested in Simanchalam. Throughout the year, he is offered sandalwood paste, but on Akshay Tritiya, it is removed from his deity. Simhachalam. So one more glory. Srila Prabhupada, when established Iskcon, then the preaching was being performed in homes. So he said that I saw the Lord in my dream, and he said that you should have a temple. So on today, he established the League of Devotee in Jhansi. आपके सामने है. This is the image from the place. To increase or give the devotees a platform, he established this League of Devotees today. And the last glory of today's work, that is the 27th glory. Today, Porbandhar's resident Sudama came to Dwarika to meet Lord Krishna. So we started from Madhvendrapuri, and we are ending or concluding with Ayachak. Sudama. Madhvendrapuri was Ayachak who never asked or begged for alms. Similarly, was the same mood of Sudama, that I will die, but I will not ask for any help. His wife told that our kids are hungry. Dwarkadish is a king, and we are the citizens. So even if you don't ask, but at least just go and meet him, then also we will be blessed. So he became very happy and satisfied that my wife is sending me to get darshan of the Lord, and it is a great fortune. So he started walking towards Dwarika. न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया से नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सका बद नसीबा गया है, मिलने सका बद नसीबा गया। द्वारिका के द्वार पर द्वारीपाल खड़े हैं। On the gates of Dwarika, the guards are stopping Sudama. बोले मुझे मेरे मित्र से मिलना है। That you're not allowed to meet the Lord. You are a beggar. How can you say that you are a friend of the king of Dwarika? Will beat you. So he said that if you beat, then I will die. But whenever Dwarikadhish passes and when he sees that who is this, then tell him that an unfortunate friend of yours
Sudama came to meet you, and I have faith that he will cry for me. So one of the god heart melted and he went to Krishna, and Krishna is sitting on the gold throne and his wives are serving him, and the god came कोई आया कौन? and said that someone has come to meet you. कहां से आए बसे के ही गामा? पहले के जमाने में लोगों की पहचान पगड़ी से होती Earlier, people were identified by the way होती थी। they used to wear their turbans शीश पर पगा, and their clothes, attires, and even shoes. न पाँव में But चप्पल है। he doesn't has any shoes or turban, so we are not able to identify from which place he belonged. धोती समझ में नहीं आता। और कहां He is wearing a torn dhoti. फटी सी लटी Uh, धोटी और उपा न की नहीं सामा। प्रभु द्वार खड़ो So we are unable to identify from where he belongs, and he he is very weak, and he has been waiting to see you. कृष्ण बैठे लेकिन उनका नाम पूछा तुमने? So Krishna asked, "Have you asked the name तब वो of that Brahmana?" The god said, द्वार दुर्बल देखी रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल को धाम। जब मैंने उसे पूछा कि when I आपका asked his name, then he said his name. बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा मेरा So when he heard the name Sudama, कूद गए, Krishna jumped from his throne and he started running towards Sudama. सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनकर ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया। मेरा सुदामा कह के कृष्ण तेज गति से दौड़े। आज तक द्वारिकाधीश Krishna started running. चला नहीं है, लेकिन आज पूरी द्वारिका So till now, he has not even walked fastly. And now he is running on the streets of Dwarika. When he saw Sudama, he और सुदामा embraced him. देखते ही बनती थी। And seeing Sudama's condition, Krishna's heart was melting. He said that you अरे मुझे एक बार तो याद किया होता, मुझे are in such a condition. You should have told me at least once. सुदामा कहते हैं Sudama told, प्रभु मैंने आपको नहीं बताया, I didn't tell you, but were you not aware of my situation? सुदामा को अपने हाथों में उठाया है आज। He took Sudama in his hands, and the whole Dwarika was amazed. इतनी सेवा की है, क्या क्या किए, लेकिन जो We serve Krishna, आज सुदामा but को मिल रहा है the अपने हाथों में उठाकर मेरा मित्र आया। fortune of Sudama is incomparable to others. He told Rukmini, my friend is here. I want to wash his feet with my own hands. सोने के सिंहासन पर बिठाया, He made Sudama sit on his golden throne. पत्नियों को कहा जाओ पानी लेकर He sent his wives to bring water to wash the feet of the Brahmana Sudama. When he saw his feet, Krishna touched his feet, पत्थर कांटे and लगे हुए, his feet इस बिहाल were सो पग कंटक pierced with लगी जोई। stones and thorns, etc. वो कांटे And वो सब
Krishna started removing them with his own hands. हाय महासुख दुख पायो सखा तुम आए न इते किते दिन खोए. सुदामा तूने बहुत देरी कर दी. He told that you have, तुझे बहुत you, पहले आ जाना चाहिए you था. are very late. You should have come long back to me. फिर तो देखी सुदामा And की दीन seeing दशा, the ना करके करुणा निधि रोए. seeing the condition of Sudama, the ocean of mercy, Krishna was crying vehemently. देखी सुदामा की दीन दशा, His eyes were filled with tears. पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए. 16,108 पत्नियां हाथ में His wives were standing with pot of water, but Krishna cleansed his feet with his tears. जी बराबर पे अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए. चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए. कृष्ण कहते हैं ना घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा. न घबराओ प्यारे, जरा तुम सुदामा. खुशी का समा तेरे करीब आ गया है. खुशी का समा तेरे करीब आ गया है. इस प्रकार इस दुनिया में So, in this manner, कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता the friendship of Krishna and Sudama कभी देखी न कभी is never been seen or heard about. कथा प्रसंग तो बहुत बड़ा है. The pastime is quite elaborate and long, but I just want to say तृतीया के on the day of Akshay Tritiya, this pious day, और सुदामा का Krishna मिलन and हुआ था. Sudama met. इस प्रकार से हम भी भगवान की सेवा करें. So let's serve the Lord in the similar fashion as he manifested to Sudama. Similarly, let's pray that he manifests in our hearts. So let's 3-4 दिन में हमने जो सुना है संक्षिप्त में मैं So, आपको कह दूं. अक्षय whatever we have heard in last 4 days, पहली महिमा let me वसंत और ग्रीष्म की संधि. conclude. दूसरा माधवेंद्रपुरी के द्वारा First, the meeting of the 2 seasons, then the starting of Chandan Yatra. Third, the सतयुग का manifestation of wheat, then manifestation of Satyuga. Fifth, पात्र की प्राप्ति. Akshay Patra to Pandavas by sun god. Then starting of Treta 8 महाभारत युद्ध की समाप्ति. Yuga, the establishing of Dharma, the end of battle of Kurukshetra, Lord giving darshan to Draupadi, प्रकट होना. 11वीं high grief manifestation, बांके बिहारी जी के चरणों का Banke Bihari ji's 12वीं महिमा lotus feet darshan, के द्वारा गिरिराज गोवर्धन पर Giriraj Govardhan, स्थापना करना. established 13वीं महिमा Shri Ji by Vallabhacharya. Annapurna Devi manifested today. अक्षय कुमार की Brahmaji's son Akshay's birthday. कुबेर को 15th Kuber खजाना प्राप्त. got his opulence today. 16th ऋषभदेव ने Rishabh Dev, 13 दिन उपवास करने के बाद after fasting for 13 months, he broke his fast उपवास करने के बाद भगवान ऋषभदेव ने गन्ने के जूस with sugarcane juice.
अक्षय तृतीया की 17वीं महिमा 17th glory, Lord Shankaracharya रचना की। wrote 18वीं महिमा जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ Kanakdhara Stotra, का निर्माण the, बनने the का starting प्रारंभ of the अक्षय तृतीया से। chariot of Jagannath Rath Yatra. 19th, the manifestation of Gangaji, Parshuram Avatar's incarnation. Lakshmi ji is giving wealth to Kuber. 22nd, birth of Nar and Narayan. 23rd, Ganesh ji wrote Bhagvatam and Mahabharat. He started writing today. 24th, all these four dhams from Uttarakhand, the doors are open from today. And 25th, Simhachalam, Narsingh Dev, they removed the sandalwood paste. Then League of Devotee was established. And 27th, the meeting of Sudama and Krishna. Hare Krishna. So I told you that we will share 25 glories, but we share 27. From tomorrow, we are going to listen to the Venu Geet. You have been listening with so much love and patience. I thank you so much. कीजिएगा। मैं विशेष धन्यवाद दूं इस कथा Please forgive me for any mistakes. I really want to thank to the organizers. माता को अच्छा नहीं Jai लगता Shri Mata Ji. जब हम उनका नाम लेते हैं, लेकिन क्या करें, मैं नहीं बोल रहा, व्यासपीठ बुलवा रही है। So she doesn't like if we say her name, but it's the Vyaspeed that is speaking. So because of you, we are able to listen and take benefit of this katha. So let's conclude the session with Jai Jaikar. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की